Konnichiwa guys और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉगवर्ट्स लेगेसी। पिछली बार हमको मिला था, कौन सा मिला था, हाउस कौन सा मिला था मेरे को तो याद भी नहीं है। तो हम अब एक्सप्लोर करने का टाइम दे दिया इन्होंने। बाकी पिछली बार तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और अब देखते हैं। तो बेसिकली मेरे को कहाँ नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है ना। मेरा मेन मिशन तो ऊपर है, बट हम एक बार नीचे चलेंगे। लाइक ये मेरे को ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक बार लेट्स चेक नीचे भाई। पानी चला सकता हूँ क्या हुआ लेकिन इससे? आई डोंट थिंक तो कुछ हो रहा है। ये क्या आया आइकन सा? ओह अरे भाई मैं ऐसे फालतू में फ्लश क्यों कर रहा हूँ? अचीवमेंट है क्या कोई? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे कुछ और है रेदर देन फ्लशिंग एंड वाट वो टुट्टी खोलने के अलावा। लेट्स गो। लेवल 3 लॉक। तो मैं इस लॉक को नहीं तोड़ सकता अभी है ना। अपन चलते हैं मेन जगह पे जहाँ अपने को जाने को बोल रहा है ये। वो नाइट्स इधर आना है आप। क्या कर रहे हो भैया आप? हेलो तू उसकी बातें सुन रही है भाई? हाँ रेवन क्लो है ना मेरे उसका नाम। ग्लोब घुमा सकता हूँ मैं। तो करते हैं इससे। क्या कर रही है भाई तू? समांथा डेल नाम है ना इसका। I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. किसको? Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones? ये कौन है? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, intelligent Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of बहुत intelligent हूँ course. मैं। I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about थोड़ी तारीफ कर देते हैं बुढ़ाऊ की। of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Nice talking to you. नहीं थोड़ी सी बातें Is it करते हैं common इससे। practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't common think है ये, हाँ? Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Okay. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Hufflepuff क्या होता है? Ordinarily, perhaps. But What it the hell runs is in my Hufflepuff? family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Hufflepuff is one of the 4 houses of Hogwarts School of Witchcraft. हाउस का नाम ले रही है ये। ठीक है भाई, nice talking to you. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Thank you Samantha. मैं ये सेब खा सकता हूँ क्या? भाई खाते रहो भाई, हेल्थ उल्ट बढ़ती रही इससे क्या पता। हेल्थ वाला वो खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन 0 है वो। ग्लोब घुमा रहा हूँ मैं। अमित इंडियन है क्या भाई तू? अमित ठक्कर। Why, hello. ठाकर जो भी है। Would you like to take a look? अमित ठाकर नाम है ना इसका। By the way कि 1890s में बेस्ड है। Too much in the day. Well, मतलब except for लेट stars like Sirius, 1800 के उसमें। उस टाइम पे Pleasure to have you in Ravenclaw. अमित नहीं होता, वो Never अमित met होता someone है। who's been so close to a अपना नाम dragon लेने आता before. तेरे को। Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like अमित astronomy. अमित होता है Oh, ब्रो। yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. मैं कभी गया हूँ? I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. ओह However, जरूरी है। I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes,
Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. आधी बातें तो मेरे को इनको समझ में नहीं आ रही। एक तो इतने भारी भारी वर्ड बोलते हैं ना ये, अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोर है। फाइंड योर कॉमन रूम, वो तो फाइंड कर लूँगा मैं भाई, बट दिक्कत ये है ना, एक तो अंग्रेजी कमज़ोर है, जाने दो। This should be interesting. और ऊपर से ये इतने भारी भारी I वर्ड दे suppose देते हैं। some introductions are in order. बाद में बात करेंगे तेरे से, पहले ऊपर देखते हैं क्या है। I mean, मैं किसी के भी रूम में घुस रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लेवल 2 का लॉक है, तो मैं ये चीज़ें याद रखूँगा ना कि यहाँ पर ये चेस्ट था, यहाँ पर वो चेस्ट था। एक बार मैं लॉक खोलने सीख जाऊँ। इधर क्या है? लेवल 1 का लॉक भी नहीं खोल सकता मैं? आर यू किडिंग मी? परहैप्स मेरे को यहीं चलना चाहिए। क्या कर रही है तू? ओए लड़का है तू तो। इससे बात करेंगे, एक बार एक्सप्लोर मारते हैं यहाँ पे। ये इसका हमारा फेलो स्टूडेंट है, दोस्त बनेगा तू। चल भाई। One moment. Watch this. Oh, shitting me. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Yes. अब नर्वस तो बिल्कुल नहीं है और। Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there. New तो Ravenclaw. सारे प्रोफेसर फॉर्म है। Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. ओके, तो मैं एक्सप्लोर तो कर ही चुका हूँ जितना, मतलब एरिया को जिसमें घूमने दे रही है मेरे को ये। उसके बाद देखते हैं अब क्या करना है। हेलो प्रोफेसर वीजली। I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I am I've ready, been dreaming of this day Professor. for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. I'll catch up Especially in no as you'll be time. expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs, OWLs. ये क्या होता है? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. क्या? मेरी Here चॉइसेस you के are. बेस्ड पे है क्या ये? मैजिक बुक, बूम। What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. ओके, तो मैं It इस would पे be टिक wise करता to take रहूंगा। full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, for this wonderful gift. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. इसके साथ वॉक करनी है मेरे को, तो मैं कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं इसके This साथ way. चलूंगा। This I'm following you, Professor. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ये ग्लोब से बहुत सारे हैं इधर। I don't know why. प्रोफेसर भाग गई आप। I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. तुम्हारे पास नहीं थी या क्या? मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल हूँ, मेरे को दे रहे हो तुम? Lumos. Why don't you cast Revelio on this bust Uh, and see what details the field guide can provide?
Revelio. मैं तो लूमोस वैसे ही कर रहा था. The bust created in honor of Ravenclaw House. Okay. You just unlocked a field guide challenge. Your progress towards completing challenges appears here. Okay, तो मेरे को ये XP इकट्ठी करनी पड़ेगी. हाँ, लेवल यहाँ से अपग्रेड करूँगा मैं. अभी मैं लेवल 1 का हूँ तो मैं लेवल 1 के चेस्टिस खोल सकता हूँ अब. अरे यार, ये तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इसमें. ऑलराइट गाइस, गेम हो गई थी क्रैश. इतनी हैवी गेम है क्या ये? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that inside. अरे हाँ, इसने चैलेंज वैलेंज का बताया था मेरे को. कहाँ गया वो? इससे क्या हो रहा है? I'm not far away. इसमें क्या है? मिल गया भाई, चलो. वो Lumos. बंद है ये. Revelio. ओ, उधर भी, उसमें भी कुछ है. सही है, मैंने रिवैल्यू कर लिया, वरना पता नहीं चलता मेरे को. कुछ खुलेगा क्या इससे? कोई सीक्रेट दरवाजा वगैरह? और अभी तो मेरे को जाने नहीं देंगे ये, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि तुम ज़्यादा पीछे हो उससे, प्रोफेसर से. तो जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं करने तो वाला ही हूँ. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue Your flames? field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. सेंट्रल हॉल ढूंढना है मेरे को अपने मैप में. जो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ वहाँ पे मैं फास्ट ट्रैवल भी कर सकता हूँ. इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मैं पक्का आधी चीज़ें तो भूल जाऊँगा, कंफ्यूज हो जाऊँगा. समझने में मेरे को काफ़ी समय लगने वाला है भाई. Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. थैंक यू प्रोफेसर, Rebellion. बट लेट मी सी. और हम यहाँ You कार can से कर get सकते हैं. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. अच्छा, ये वही तस्वीरें हैं जो बोलती हैं, मतलब बोलती नहीं, जो resources. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be Oi. all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. नहीं, पहले इसे You सवाल कर mentioned लेते हैं. Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be Okay. able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. हाँ, जैसे You will हैरी को also, वो I झाड़ू imagine, मिली थी वहाँ enjoy पे. many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A Oh. mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? सारे सवाल पूछ Exactly लेते what हैं. you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. हो सकता है भाई. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor अरे! Fig has his reasons for keeping the details. इसको बता क्यों दिया मैंने? Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. थैंक यू. काफी लंबी Good लंबी luck कन्वर्सेशंस है तुम्हारी भाई. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. तो मेरे को 2 classes attend करनी है क्या? For those supplies. What the hell is this? कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे. हाँ भाई प्रोफेसर. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes. इसको सच बता ही देते हैं. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. ठीक है, मैं छुपा के रखूंगा. वैसे भी ये ना थोड़ा वो करेंगे फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे मेरे पे. मेरे को लग रहा है. With your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold Why not? and have a look. Why not, bhai? You can track available quests from the map. I would say मैं ये डिफेंस वाली क्लास लेना पसंद करूँगा ताकि मैं थोड़ा वो सीख जाऊँ. ट्रैक करते हैं इसे. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For Okay. now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. तो मैं डायरेक्ट तो नहीं जाऊंगा. सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके जाऊंगा. ठीक है, अब मैं करता हूँ एक्सप्लोरिंग शुरू. इधर चेस्ट वेस्ट से पड़े हैं वे. इससे क्या हो रहा है भाई? इससे पता नहीं भाई इससे क्या हो रहा है. बट खुलता तो कुछ है ही नहीं. ये बाहर जाने का रास्ता होगा. ये लोग पड़ा है तो यहाँ पे भी मैं अब ट्रैवल कर सकता हूँ. अरे भूत भी इतने मोटे हो रहे हैं. क्रिम्सन क्विडिच ग्लव्स. इन ग्लव्स का मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ भाई प्रैक्टिस चल रही है. अच्छा काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें मतलब. और काफ़ी बड़ा मैप है. मतलब ये होगवार्ट्स और मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ. बट थोड़ी बहुत चीज़ें ना लोग पड़ी हैं अभी. ओह सीक्रेट दरवाजा. आई लाइक इट. रग्ड ड्यूलिंग ग्लव्स. ग्लव्स क्यों मिल रहे हैं? मैं इनका क्या करने वाला हूँ बाय द वे? ये भी लोग पड़ा इधर. मैं तो पहले एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बाद में करेंगे मिशन. ये मेरे को सिक्के से मिल किस चीज़ के लिए रहे हैं
पता नहीं भाई। डियर प्रोफेसर एलेनोर को स्ट्रॉबेरी पसंद है। हाँ, वो मैं तैर भी सकता हूँ। और मैं ऐसे अंदर कैसे जाऊंगा? क्योंकि मेरे को ना यहाँ अंदर वो दिख रहा है, चेस्ट अभी दिखा था जो। देखिए ये रहा ना। लाइक शायद अभी नहीं जा सकता, मेरे को सीखना पड़ेगा शायद डाइव वाइव मारना। मिशन तो देंगे शायद ये, देखते हैं भाई। यहाँ पर मैं आया था ना। Hello, I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. ये वही है क्या Everyone जिससे thinks बात की I'm थी? utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. हाँ, समांता से But बात की it's थी this हमने। painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. रिडल तो है भाई, If I can मैजिक work का out the वर्ड है riddle ये। of this वर्ल्ड one, बोल I'll रहा know हूँ, what वर्ड to है do नहीं with all of वर्ल्ड। them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. लूमोस। If I have the time, I may look. Could be intriguing. Yeah, I've been I'm racking my obviously gonna brains look. long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that Lumos. solves the mystery. That spot must be a Whoa. clue. I should look around in case it's nearby. या भाई। Revelio. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. अच्छा, ये तितली उस तस्वीर से उड़ के आ गई थी क्या? इसको वापस लेके जाना है। इधर बीच में कुछ दिखा रहा है, इसको भी यूज करेंगे। रुको। I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. या बट वो है कहाँ? गाइड मिली। My aunt Revelio. swears are from Sigmund Fudge himself. वो Make it up. चालू हो गया ये। इससे कुछ नहीं हुआ ना, कोई नहीं, इससे बात कर लेते हैं भाई। इसका मिशन हमने किया है ना। Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? अरे it was very easy. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. अरे कोई You नहीं। have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit. Although he does tend अमित to नहीं है वो, over-explain. अमित है। Well, I'm glad someone figured it out. The moth. I should have seen that. हा हा हा। एक्सपी बढ़ गई और अपना लेवल 2 का हो गया। तो मैं मे भी ना लेवल क्या बोलते हैं, लेवल 1 के लॉक्स खोल पाऊंगा अब मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं भाई। चेस्ट मिला, हंटर फिंगर एंड ग्लव्स। इन ग्लव्स को मैं करने के वाला हूँ, काफ़ी मिल रहे हैं मेरे को। लेवल 1 लॉक। अरे भाई मैं लेवल 2 का नहीं हो गया। मैं पहन सकता हूँ यहाँ से। यही वाला पहन लेते हैं भाई, और क्या करें। 2 बढ़ा रहा है वो अपना। अनदर चेस्ट। एक और ये मिला मेरे को, फील्ड गाइड मिली मेरे को। म्याऊ म्याऊ, क्या कर रही है म्याऊ म्याऊ तू यहाँ पे? भैया कोई प्रोफेसर ना निकल जाए। ऐसा कुछ हुआ? आई डोंट थिंक सो। Revelio. एक और मिली मेरे को। मैं पढ़ना नहीं जा रहा यार, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। ये क्या है? डायनासोर की स्कल। चेस्ट। वेस्ट टावर में आ गया मैं। Lumos. एक और मिली मेरे को ये। Revelio.
मोस्ट तो मैंने कर दिया। यहाँ पे इसकी तितली कहाँ है? Luma. ये रही। कुछ मिला मेरे को इससे? फील्ड गाइड मिली। हाँ, एक्सपी बढ़ गई। ये बहुत सारे ग्लोब्स हैं, इनका पता ही नहीं चल रहा भाई। हर बार ये बात बोल रहा हूँ और मैं। ओह हेलो, बंद क्यों है भाई तू? ये तो फ्लश करने का और कुछ नहीं है। चेस्ट मिला एक और। एक काम करते हैं ना भाई, अब ना अटेंड करते हैं, बाद में देखी जाएगी। एक्सप्लोरिंग अब बाद में करेंगे, पहले एक बार अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ना लिटरली आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया फालतू में घूमते हुए। फील्ड गाइड छोड़ना कौन ही पड़े। लेट्स गो भाई, अपना मेन वो करते हैं। अब काफ़ी देर होगी मेरे को इधर उधर घूमते हुए। यही तो सीखना है मेरे को। डिफेंस का सीखेंगे। डिफेंस मेरे पास 0 है। Professor Whoa. Hackett. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great मतलब इसको poacher raid बच्चों of की चिंता नहीं है। 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. ओहो बुढ़िया, To है the गरी पूरी। wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ऑल राइट, देखते हैं अभी क्या करना है। नहीं सीखनी है। ऑल राइट गाइस, पता नहीं है गेम बार बार क्रैश क्यों हो रही है, पता नहीं भाई, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। बट ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं कहाँ से हमें छोड़ा है। ऑल राइट, जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं पे आ गए हम। और लेट्स सी इसे कैसे करना है अब। फर्स्ट ट्राई बेबी। लेवियोसो सीख रहे हैं हम। Levioso. सामान उड़ा सकता हूँ इससे मैं, लेवियोसो से। Now, let's try something a little larger. लाइक ओके, दिस स्टैचू क्या है ये? इसको बुढ़िया को उड़ा देना आर्थर, एक काम कर, बुढ़िया को ही उड़ा दे, भैंस की आंख। मेरे को मौका दो तुम उड़ाने का, उड़ा दूंगा मैं तो इसको। Let us begin with a basic cast. बेसिक कास्ट। See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. पहले Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. तो येलो शील्ड को तोड़ने के लिए पहले ये, फिर ये। Now, well done. भैंस की आंख। बूम। कॉम्बो देख रहे हो Very तुम? good. But the best way to practice is by dueling. यस, We'll भिड़ लो, start कौन सा with भिड़ेगा? you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. प्रोटीको कौन सी थी? एक मिनट, वेट 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 वेट। प्रोटीको कौन सी थी? Levioso. Good form. I know. मैं तो बरसा दूंगा। Nothing lucky about it. This can't be your Levioso. Let's just say. Given all of my अरे skill, कितनी हेल्थ है? मौका भी नहीं दिया मैंने तो उसको। Bad for a beginner. You give as good as you get. इसको तो मौका ही नहीं दिया मैंने। अरे भाई कैसा बंदा है तू?
I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. अरे मैं बता दूंगा I सबको. demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom will duel achieve is it. one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. अरे मैं Understood, बैटल कर Professor. चुका हूँ उन्हें. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. सैलो Again, कौन है? well done today. I shall reach out soon with additional assignments. अरे असाइनमेंट्स यार, एक तो मेरे को भी असाइनमेंट लिखने हैं. That's enough spectacle. याद दिला दिया for one तूने. day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. इसका नाम हैकेट है. मैं तो भिड़ लूंगा भाई, मैं डरता. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. अच्छा. If you know the right... You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Thank you. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. इसका नाम भी आर्थर है. हाँ? प्लमी आर्थर. ओए. इससे बात कर लेते हैं भाई Nice जब. work. I enjoyed that. मैं तो बहुत Duel मजा was लिया. quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. अरे मैंने अच्छे को चटा रखी है धूल. तू क्या है? इसको बता देते हैं I've शायद. dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned क्या होता है? Sounds intriguing. Intriguing का मतलब बता रहा है ये पहेली जैसा. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. मैं तो Whether rules it's तोड़ूंगा ही joining a वैसे भी. secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. Yeah, You बिल्कुल just जाऊंगा. have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. You Perhaps will see me somewhere soon. Unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Quest completed. By the way यार इसके वर्ड बहुत भारी भारी हैं. आधे तो मेरे को समझ में ही नहीं आते. इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी ना मैंने. न्यू कैस्ट आ गई. Go to Charms class, but उससे पहले Revelio. इधर ये भी है एक और. Lumos. बिल्ली. बिल्ली से होता क्या है? इसको पैट तो कर रहा हूँ मैं. ये भी अचीवमेंट वगैरह है क्या कुछ? पता ही नहीं चलता कि क्या किस टाइम क्या कर रहा हूँ मैं. Lumos. इसकी तितली नहीं मिल रही भाई. मैं ढूंढ चुका हूँ, घूम तो चुका हूँ, बट मिल ही नहीं रही है भाई. इसकी तितली नहीं मिली मेरे को. मैं ढूंढ चुका हूँ बट मेरे को मिल ही नहीं रही है. मैं क्लास में जा रहा हूँ. डार्क ग्रे स्वर्ल. इससे क्या होगा बट? प्रोफेसर फिक का नोट है और मैं पढ़ूंगा नहीं इसे. मेरे बस की नहीं है पढ़ना. यहाँ पर भी बिल्ली है. चेस्ट. स्केयर करो सोर्सरर हैट. पहन लेते हैं इसको. रुको एक मिनट. यहाँ पर भी ये पजल है भाई. You'll get us all detention. What is this भाई? Nothing is happening भाई. Levioso. ऐसी की तैसी तेरी कुछ हो ही नहीं रहा है.
स्ट्रैक हेलो क्या इधर फील्ड गाइड भी मिल गया अपने को एक और नोट और काफ़ी बड़ा है जो कि मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन इसमें लिखा था सुचरिता वेट वाले ग्लव्स पहन लिए मैंने बढ़िया वाले सुचरिता इतना कौन पढ़े लेकिन लोक चेस्ट है ये नहीं तोड़ सकता इसको मैं तो ऊपर जाए जा रहा हूँ और ये होगवार्ट्स खत्म ही नहीं हो रहा यार इधर भी है ये Levioso. Lumos. चेस्ट तितली तो है इधर भाई मैं तो ऊपर आ गया हूँ चौखी और अभी तो और ऊपर जा भी सकते हैं ये रही तितली इसको नीचे लेके जाना है बट उससे पहले यहाँ पर देख लूँ क्या है चेस्ट है इधर एक और कंप्लीट हो गया क्या मिला मेरे को दो और लेनी है बस फील्ड गाइड एक और की तितली तो मेरे को मिली नहीं वो भी देख लेंगे अब ना चलते हैं इस पे साइड मिशन पे चलते हैं पहले अरे डरा रहा है भैंस की तेरी भैंस की मारने नहीं दे रहे तेरी मारता बहुत भैंस की जोकर कहीं का इधर क्या है ये फील्ड गाइड एक और चाहिए बस अपने को ओ इसके अंदर कुछ है चेस्ट स्कार्फ मिला मेरे को एक अरे 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 ये क्या था भाई ये क्या था ओरे भैंस की नीचे गिर गया और वापस आ गया क्या मैं इधर ही आना था ना मेरे को उस क्वेस्ट के लिए ये क्या है और मैं इससे इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ एक मूर्ति सी और थी वहाँ पे चेस्ट एक ड्रेस टाइप मिली है मेरे को भाई इसके अंदर कैसे जाऊँगा Can I help you? इससे बात करनी है मेरे को ड्यूलिंग के लिए Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Yes. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. बरसा दूंगा And to liven things up, the winner is awarded a prize. क्या prize? Of course. Dueling's an entertaining pastime. अरे entertaining pastime हमारे लिए dueling तो हैं? You can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Next time के लिए मेरे को पार्टनर लाना पड़ेगा ओके Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! भिड़ ले भाई Hopefully बस यही We'll make you regret signing up. Initiate round मतलब Leviosa. Leviosa winner. Protego. Find the one. Leviosa. मर गई ना यही रह गया ना बस अरे तेरी बरसा दिए Glad I didn't bet on that round. बरसा दिए ना फालतू में पंगे Nice work. Sebastian wasn't wrong about you.
There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Thank you, जो भी तेरा नाम था. Hope to see you back here again. Revelio. XP बढ़ गई अपनी. नाइस. कैसे खुलेंगे ये गेट से? भैया फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं वहाँ पे अपने चाम उसके पास और कुछ तो नहीं है ना. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish. Let's go to the charms class. Quest करते हैं अपनी. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. क्या नाम है भाई? लड़की है ना तू? So you are the new student. Have you met Professor Netty Ronan yet? Net Sai Onai. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Incantations होता क्या है? पहली बात तो यही नहीं पता मेरे को. Practicing Obliviate on one another. Obliviate क्या होता है और? Do you even इतनी remember how to घटिया perform a vocabulary है basic मेरी. summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. You Now forgot, let's put huh? those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. क्या करना है तो मेरे को? मैं ही पहन रहा हूँ टोपी सी वो. All right. नई स्पेल सीखने का. अब तो इजी हो गया ये करना. Accio. सामान खींच सकता हूँ मैं किसी से. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. आफ्टर में इसका एक्सेंट कितना सही है. बाहर आ गए हम. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what Lag हो रही है better भाई than game. a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? That's right, बुढ़ऊ. बेटे. So why don't we have our newest ये student गेम तो start us इंटरेस्टिंग off? लग रही है. क्या करना है मेरे को? What I need to do? क्या करना है मेरे Very को? simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes?
Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. तो मेरे को करना क्या है? The summoning charm again pulls a target closer to the caster. Tear the assign key to caster. Pull a target closer. Tear the key again to cease casting the spell. Very good. Not to worry. नीचे गिर जाएगा क्या ये? क्या करना है मेरे को? Splendid. Excellent control there. Don't lose your composure. ओ तेरी नीचे कैसे गिर गया तू? Very good. ये थोड़ा सा Points अजीब to समझ नहीं आया था Ravenclaw. मेरे को. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. हारना नहीं है You भाई, did जो the भी हो rules देखा just as जाएगा. before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. नाथसाई की टर्न है हाँ. Here we go. That is how it's done. अच्छा हारना नहीं है भाई, देखा थोड़े बेस्ट ट्राई करेंगे हम अपना. That is how it done, bitch. That's it. Be sharp. ये भी 50 ले रही है भैंस की, पीछे नहीं हट रही. वो नहीं लेना, यही लेना पड़ेगा. ये बड़ा तेज आया था भाई. Watch this. तू इतनी परफेक्ट कैसे है पहले तो ये बता. Accio. देख मेरे को ना वो नहीं करना. नहीं 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 नीचे नहीं. A perfect score. Remarkable. जस्ट बच गया भाई. बेइज्जती बेइज्जती तेरी बेइज्जती. Let us make this a bit more interesting, shall we? अब क्या होगा? I think we are well past interesting at this point. I'll say. यार मेरे को हारना नहीं है इससे. Focus now, you will need it. This round settles it all. Let us see this. भाई मैं जीत चुका हूँ पिछली बार. That is how it's done. रुक जा तू. वो वाली लेनी है मेरे को. मैं तो ये वाले मारूंगा. I know everyone is watching, but try not to Accio. be nervous. You are doing quite well. 50 50 50. हाँ Here we go. ये तो इसका 50 है भाई, आराम से बिल्कुल. Phew. Brilliant. इजी. Watch this. ये भी भाई बुरी नहीं है. जा जा नीचे जा नीचे जा नीचे जा. Oh dear me. Yeah. Just need to score a single point. Perfect. 2 perfect rounds. You're a natural. You कैसे लगी बुड्ढे? इम्प्रेस हो गया. फर्स्ट ट्राई में कर लिया दोनों बार मैंने. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you.
Took me weeks to हाँ become चल चल proficient with दूर हो. Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier. अरे I promise. बिल्कुल इजी था भाई, सिर्फ 2 ही बटन तो दबाने थे. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world. at a new Uganda? school in a new country. युगांडा से है तू? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. मैं भी चाहूँगा कि मेरे पास एक जादू करने वाली वैंड हो. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. How big is Uganda? तूने युगांडा नहीं बोला था? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger क्या than बात कर Hogwarts. रही है? But it never seemed intimidating मेरे को or जाना है फिर तो वहाँ. overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding Thank you. school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. I'll keep him waiting. I'll keep him waiting. on humans, if you're so inclined. पहले से बात करें. कौन है तू? You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know अरे it's going to work on. तेरी बात कट गई. हेलो. अरे तू मेरे को अच्छी लग रही है. हेलो. नहीं कर रही भाई बात. हाँ भाई तू कैसे डिप्रेस्ड बैठा है? My grandfather, loads of wisdom, but a bit mad. Revelio. ठीक है भाई, अब इस प्रोफेसर से बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. कुछ कास्ट 3 कितनी स्पेल सीखी है मैंने? 2 स्पेल और सीख लिए हैं और नेक्स्ट में और सीखेंगे. तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में. तब तक के लिए गुड बाय.